Geological afternoon all of you, and welcome to this session on Operation Sindoor. कल की रात जब आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे और हमारे जैसे कुछ लोग सो रहे थे, Indian Armed Forces have attacked certain sites in Pakistan occupied Kashmir and Pakistan. It is being said that it is a revenge of the dastardly attack that happened on 22nd of April in Pahalgam. सब एक ही बात पूछ रहे थे, everyone wanted that revenge and rightly so. Civilians पे अटैक हो रहा है, they simply enjoying the time with the family और हमारी धरती पे हमारी लैंड पे कुछ लोग आ जाते हैं और हमारे कुछ लोगों को मारकर चले जाते हैं. We have every right to respond and it's not revenge, it is response. Revenge is a wrong word in diplomacy. Revenge is a wrong word when it comes to India's positioning as a responsible global leader. Response is the right word. Response to a country that has been the hotbed of terrorism for decades now. As we go on to study more about this issue, Operation Sindoor क्या था, कौन-कौन सी sites पे attack हुए, what were the missiles that were used, what was India's stand, what was the world's stand about it, सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी जल्दी से. Operation Sindoor is obviously the immediate reason, I will say the immediate reason because of which this operation was conducted was definitely the Pahalgam attack. But as we go on to understand the particular sites which were identified, जिन sites पे ये attacks हुए, क्या importance है उन sites की, तो हमें समझ में आएगा ये सिर्फ पहलगाम के अटैक पे रिस्पॉन्स नहीं है, बट ये सालों से चले आ रहे हैं पाकिस्तान का जो एक्शन रहा है, एक्ट रहा है, हार्बरिंग टेररिज्म, एडिंग टेररिज्म, कंट्रोलिंग टेररिज्म, स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स है. इंडियाज रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया सिग्नलिंग टू द वर्ल्ड दैट यस वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट लाइक वी हैव डन इन पास्ट. नो टॉलरेंस टू टेररिज्म एट ऑल. When I say Operation Sindoor, what was India's stand? Ministry of External Affairs ने particular statement बोला that this is a focused, measured and non-escalatory in nature. The operations are focused, measured and non-escalatory in nature, and we have ensured that none of these strikes are on any of the Pakistan, none of these sites, none of these attacks are on any of the Pakistani military facilities. And you eventually will understand. हम लोग जब आर्टिकल 51 पढ़ेंगे यूएन चार्टर का, उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं अभी थोड़ी देर में, तब समझ में आएगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है. We are saying that it is focused, measured and non-escalatory. Focused, measured, targeted, precise and non-escalatory. The sites that were targeted, 9 sites पे अटैक हुआ, उसमें से 4 sites पाकिस्तान में है, प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर आता है, उनकी टेरिटरी में आता है, और 5 ऐसी साइट्स थी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है. These are all sites which were identified through intelligence agencies, जिन्होंने historically उनको identify किया as terror camps. There are 3 major terrorist organizations which are operating and aided by Pakistan and operating through Pakistan. One is Jaish-e-Mohammed, the other is Lashkar-e-Taiba, and the third one is Hizbul Mujahideen. When I talk about particularly the locations that were identified inside the Pakistani territory, I find that one territory that was Bahawalpur. Bahawalpur is the hotbed and the headquarters of Jaish-e-Mohammed. Jaish-e-Mohammed के जो head है मसूद अजहर, recently अभी उनका कुछ उस पे there is a comment that has come just one hour ago कि कुछ family members have died and all that thing. But हाँ, जैश-ए-मोहम्मद का हेड ऑफिस है बहावलपुर में. बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेड ऑफिस पे स्ट्राइक हुआ है. जैश-ए-मोहम्मद is headed by this person called Masood Azhar, who was responsible for Pulwama attack and the attack on Parliament. पुलवामा अटैक और पार्लियामेंट अटैक जो 2000 में हुए थे, उसको वो और पुलवामा जो 2019 में सुसाइड अटैक हुआ था, all these were aided by Jaish-e-Mohammed. इसलिए मैंने बोला this is immediate reason, obviously it is पहलगाम. Immediate reason तो पहलगाम ही है. बट अगर हम लॉन्ग टर्म रीजन देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि हम लोग और पीछे की कुछ चीजें हैं जिसके लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या एवेंज कर रहे हैं. सियालकोट
सियालकोट की इंपॉर्टेंस किस बात से आती है? हिजबुल मुजाहिदीन का जो इंपॉर्टेंट टेरर कैंप है दैट इज मेमूना जोया कैंप, सियालकोट में वहां अटैक हुआ। और मुरिदके which is Hafiz Saeed is the person responsible for 2008 26/11 attacks। मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा का मेन हेड ऑफिस की तरह है। हाफिज सईद इज आल्सो इन मुरिदके। Also 2008 attacks के अलावा मुरिदके is considered as the terror nursery। मुरिदके is also the place where Ajmal Kasab and David Headley were trained before the 26/11 attacks happened। आज हम जो देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर is not just a response, not just a revenge to operation, not just a response to what happened on 22nd April, it is a larger response to the entire ecosystem of Pakistan that has been sponsoring terrorism for years and decades now। Further going ahead, what were the two missiles that were used? One is SCALP, SCALP, and the other one is Hammer, Hathoda, Hammer। SCALP is basically also called as Storm Shadow। It is a long-range air-launched cruise missile। Long-range missile है 250 किलोमीटर तक की इसकी स्ट्राइक रेंज है और उसको air-launched है। It is an air-launched, air-to-surface missile, air-launched cruise missile है SCALP। Hammer एक precision missile है, very precise। जहां जाना वहीं जाना। Precision missile to attack। कई बार they also know that they are running ultimately a terrorist camp। तो पूरी तरह से fortified terror camps होते हैं। तो fortified terror camp को सही में आपको destroy करना है तो require powerful missiles but precise missiles। India is very clear, our intention is not to attack Pakistani civilians, our intention is not to attack any of the Pakistani military establishments। We have attacked identified terror operations, terror offices, terror head offices, and we have attacked them। It's a precision strike, that is why it is called as surgical strikes। These are surgical strikes, precision strikes, and that is what our Ministry of External Affairs is also saying। Now coming to the international treaties। अच्छा, international treaties से पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं what the world has to say about the attacks। By the time it was morning in India, of course, US में तो अलग टाइम चल रहा था। Marco Rubio, the US Secretary of State, has said, hopefully this ends quickly and will continue to engage both India and Pakistan towards peaceful resolution। US being US, वहां पर चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जल्दी से जल्दी आए और somewhere they are the mediators, they always love to be the mediators। हम लोग ने इजराइल पैलेस्टीन पढ़ा है, we have read about Camp David Accords, we have read about Oslo Accords। Everywhere we see US being the mediator, trying to be the mediator। Again they have, जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसको मीडिएटर बनने की कोशिश करें। Antonio Guterres, the UN Secretary General, has to say, world cannot afford military confrontation between India and Pakistan। I don't know about the world, but Pakistan definitely cannot afford a military confrontation। China's foreign ministry, they came out saying that Indian military operations are regrettable। उन्हें बुरा लग रहा है, और क्यों ना लगे। 2010 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने एक बार बोला था कि पाकिस्तान एंड चाइना's friendship is higher than the Himalayas, deeper than the ocean, sweeter than the honey, and stronger than steel। That is precisely what we are saying। आज उनके कमेंट्स में भी दिख रहा है, they are saying that the attacks are regrettable। Israel supports India's right to self-defense। इजराइल के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने बोला they support India's right to self-defense and have completely supported India's counter-terror operations, and that is precisely what India is calling it। Let's understand, इंडिया ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बोला that India has attacked Pakistan। इंडिया के लिए ये काउंटर टेरर ऑपरेशन था जो कि जरूरी था, जितना मैंने अभी तक आपको बताया और समझाया। Now coming to international treaties that are involved, the first and the foremost international treaty which justifies and allows us to use this kind of power is the Article 51 of the UN Charter, United Nations Charter, Article 51। Article 51 upholds a nation's right to self-defense। अगर आप पे अटैक हुआ है तो आप ऑब्वियसली उस पर रिटेलिएट कर सकते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस। फर्दर इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है, if there is an armed attack on you, of course, और प्लस अगर आपको दिख रहा है कि there is a territory like पाकिस्तान एक ऐसी टेरिटरी है जहां हमें दिख रहा है
कि these terror groups are based in Pakistan. अभी हमने देखा हो भागलपुर हो, सियालकोट हो, all these मुरीद के हो, terrorist organizations have made Pakistan as their hub, and Pakistan is unwilling and unable to control these activities. Non-state actors को अगर आप control नहीं कर पा रहे हैं, so obviously India reserves the right of self-defense under Article 51 of the UN Charter. Not just that, there is something called as responsibility of states for internationally wrongful attacks. 2001 का एक इंटरनेशनल लॉ कमीशन नाम की चीज है, जो कि एक यूएन बॉडी है, एस्टैब्लिश हुई थी 1947 में, जिसका काम है इंटरनेशनल लॉ को पीरियोडिकली वो ड्राफ्ट करता है, पीरियोडिकली उसको अपडेट करता चलता है. तो उन्होंने 2001 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर, 9/11 अटैक्स हुए थे 2001 में. तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने एक स्टेट रिस्पांसिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिक ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स निकाले थे. उन ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी अगर हम देखें, अ स्टेट बिकम्स लीगली रिस्पांसिबल इफ स्टेट एड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स और फेल्स टू प्रिवेंट रॉन्गफुल एक्ट बाय नॉन स्टेट एक्टर्स. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मेरे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, मैं कह रहा हूं मैं नहीं करवा रहा, लेकिन ये पैरेलल भी चल रही है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो भी मैं रिस्पांसिबल हूं. तो यहां पर पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी अपहोल्ड होती है, और उसके लिए अगर इंडिया को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच भी करना पड़े, तो दैट इज करेक्ट. दैट इज टोटली एक्ट इन इंटरनेशनल लॉ. If I take example of USA and Israel, we all know that there was a very big terrorist attack that happened in 2001. 9/11 अटैक जिसको बोलते हैं, ट्विन टावर्स वर ब्रॉट डाउन बाय एयरक्राफ्ट्स. जो एयरक्राफ्ट्स थे उनको उन ट्विन टावर्स में ले जाके टकरा दिया था, और फिर दैट एंटायर बिल्डिंग केम डाउन. इट वाज very big terrorist attack. After that terrorist attack, it was found that Al-Qaeda was a terrorist organization responsible for it. Al-Qaeda headed by Osama bin Laden. Al-Qaeda was the terrorist organization responsible for it, and Al-Qaeda was housed in Afghanistan and were given support by Taliban. Taliban was ruling Afghanistan at that time. So Taliban was not able to control Al-Qaeda, and Al-Qaeda sitting in Afghanistan was able to conduct attacks in US. US said that under Article 51 of the UN Charter, we have every right to attack all the territories inside Taliban as long as it is an attack on Al-Qaeda. यूएस ने ये बोलकर अलकायदा पे अटैक किया. यूएस ने एक मूवी आई थी जीरो डार्क 30 इज दैट मूवी वेयर इट हैज शोन एक्चुअल में जो यूएस का ऑपरेशन था, जहां पे पाकिस्तान में एंटर कर ओसामा बिन लादेन को उनके घर पे मारकर वापस आए. व्हेन यूएस जैसी कंट्री भी अपने देश में अपने सिटीजंस को बचाने के लिए इस तरह के अटैक्स कर सकती है, इस तरह के रिस्पांस दे सकती है, इंडिया आल्सो हैज एवरी राइट टू डू इट. And when it comes to capabilities, we are very sure, आप और हम बहुत क्लियरली जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज पे हमें किसी प्रकार का संशय नहीं. क्या इंटरनेशनल लॉ में ये वाजिब है, ये कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. वी हैव प्रेसिडेंट्स. इजराइल हैज आल्सो जस्टिफाइड इट्स अटैक इन लेबनान और सीरिया में जो हिजबुल्लाह के जो प्रिसीजन अटैक्स किए गए थे हिजबुल्लाह के कैंप्स पे या हिजबुल्लाह के लीडर्स पे, इजराइल ने भी इसी तरह से उसको जस्टिफाई किया था. That these are not attacks on the civilians, these are not attacks on the particular military establishments of these countries, but these are counter-terror operations on entities which are running from that territory and are targeting our citizens. Operation Sindoor is going to go down in the history. All of us, हम लोग जहाँ पे territories में बैठे हैं, I'm in Bhopal right now, you might be in Indore, you might be in Delhi, whichever part of the country you are sitting in. Many territories have been identified for mock drills. ये mock drills जरूरी हैं. We do not know what is going to come next, but whatever comes next, we all stand strongly with the government of India and the armed forces, of course. What is it for a CLAT aspirant in this entire story? You need to understand diplomacy. You need to understand the geopolitical developments. तो एक law aspirant के point of view से मैं आपको बताता हूँ क्या सीखना जरूरी है. When India says focus, measured and non-escalatory in nature, every word has a meaning. Every word has a meaning, and every word has direct implication on our international laws and diplomacy of India with other countries. Tomorrow, you will be the public policy makers.
Tomorrow you will participate actively in negotiating international treaties. Tomorrow you will participate actively in ensuring that international law is so robust that countries like Pakistan are not allowed to do what they continue to do. So learn right now. GK के point of view से अगर मैं बोलूँ, उस दिनों से Indus Water Treaty was the news. Indus Water Treaty, again a treaty that was signed in the year 1960 between India and Pakistan, with World Bank as the mediator. और उस treaty में there were certain rivers which were identified as western rivers and there were certain rivers which were identified as eastern rivers. Western rivers में you had Indus, Chenab और Jhelum, which were the control of which was given to Pakistan. Eastern rivers, जिसमें कि रावी, बेयास और सतलज, the control of eastern rivers were given to India. और इंडिया ने अभी बोला है, और उसमें बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंडिया अग्रीड दैट अगर कोई रिवर है जिसमें अगर हम एक अपर रिपेरियन स्टेट है और हमसे वो पानी होता हुआ पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो इट्स ऑल राइट, वी आर रेडी टू शेयर दैट वाटर. But water and blood cannot flow together. That is someone has said it rightly. Water and blood cannot flow together, and that is precisely why we have put the Indus Water Treaty in abeyance for right now. हम सब आज मैंने जितनी भी चीजें सेशन में पढ़ी, यूएन के चार्टर हो गया, आर्टिकल 51 हो गया, important personalities like Marco Rubio, who is the US Secretary of State, the Prime Minister of Pakistan, the Armed Forces के जो उनके जनरल है उनका नाम, these are the things that we need to learn and need to write down in our notes. ये सारी चीजें हम अपने नोट्स में लिखें. अभी नेक्स्ट वीक का वीकली राउंड अप में I'll cover all of this. But the point is, are we revising these? Are we reading newspaper daily or not? Read newspaper daily. These developments affect you and me directly, first of all. And secondly, even if there is no major escalation, we have to appear in CLAT. CLAT के लिए तो पढ़ना ही है. ये सब पढ़ते चले. Stay safe. And let's just hope that पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आ जाए. इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. ठीक है? And with that I'll end this session. Stay blessed. I'll see you again. Bye.